Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Thursday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic, business and stock market news of the day. Well, I'm Lalema Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Sonu Sood. धन्यवाद लालिमा। नमस्कार श्रोताओं, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। रोज की तरह आज भी हम देश और दुनिया से आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार के ताजा समाचार आप तक लाएंगे और उन पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विशेषज्ञ राजीव नागपाल। राजीव जी नमस्कार, मार्केट मंत्र में आपका स्वागत है। धन्यवाद सोनू। और अब हेडलाइंस के साथ हैं लालिमा अनेजा डांग। Thank you, Sonu. Yes, begin with the headlines first. Domestic stocks log modest losses amid weak global cues. Sensex closes below 58,600. Nifty settles near 17,450. Rupee appreciates to 75 rupees and 79 paise against the US dollar, and Brent crude prices plunge 6% to trade around $107 per barrel. कमजोर वैश्विक संकेतों के बीच प्रमुख घरेलू सूचकांक मामूली गिरावट पर थे। सेंसेक्स 58,600 के नीचे आया। निफ्टी 17,450 के करीब हुआ बंद। रुपया डॉलर के मुकाबले मजबूत होकर 75 रुपये 79 पैसे प्रति डॉलर पर पहुंच गया और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतें 6% लुढ़ककर $107 प्रति बैरल के करीब पहुंची। शुरुआत करते हैं शेयर बाजार से। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले नकारात्मक संकेतों के बीच सेंसेक्स और निफ्टी आज सामान्य गिरावट पर बंद हुए। सेंसेक्स 58,600 के स्तर से नीचे आ गया और निफ्टी 17,450 के करीब बंद हुआ। कारोबार की समाप्ति पर बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स 0.2% की मंदी से 115 अंक कम होकर 58,569 पर बंद हुआ। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.2% की गिरावट से 34 अंक टूटकर 17,465 पर बंद हुआ। विस्तारित बाजार की बात करें तो यहां आज बढ़त का रुख था। बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.29% की बढ़त में रहा और स्मॉल कैप सूचकांक में 0.31% की वृद्धि दर्ज हुई। The Sensex and the Nifty today logged modest losses. Both stock indices fell amid negative cues from global share markets. The BSE Sensex closed below 58,600 level, while the NSE Nifty ended near 17,450 points. The Sensex fell 115 points or 0.2% to close at 58,569. Nifty also slipped 34 points or 0.2% to settle at 17,465. In the broader market at the BSE, the mid-cap rose 0.29% and the small-cap index ended 0.31% up. In the Sensex pack, 15 companies logged gain while 15 declined. Hindustan Unilever gained the most as it rose 1.7%, followed by Mahindra & Mahindra, which added 1.6%. Axis Bank climbed 1.4%. On the other hand, Reliance declined 1.5%, Wipro fell 1.4%, and Dr. Reddy's Lab ended 1% down. In sectoral indices at the BSE, 12 indices gained while 7 witnessed losses. Telecom gained the most as it added 1.9%. FMCG index rose 1% and power climbed 0.9%. On the other side, healthcare index lost as it slipped 1%. Metal declined 0.4% and IIT fell 0.3%. The overall breadth of the BSE trade was negative as shares of 1,451 companies gained while 1,951 fell. Shares of 105 companies remained unchanged. Well, Rajiv, yes. रुपए की बात करें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया 12 पैसे मजबूत होकर $1 के मुकाबले 75 रुपये 79 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। 6 अन्य प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती मापने वाला डॉलर सूचकांक अंतर दिवसीय कारोबार में 0.4% की बढ़त से 98.19 पर था।
Well, Rajiv, this is a special bulletin in a way because this is the last year of this financial year. Tomorrow, the next financial year begins. We see that there are clouds of the war between Ukraine and Russia. We've had COVID, and post-COVID, we touched 60,000. The Sensex touched. We still have tail end disruptions. How do you view the last year gone by? Well, I think it was another very good year, 2 round years. And you see, if you look at the history, there have been only 2 or 3 instances where you have seen index moving in such a strong manner for 2 to 3 consecutive years. So, and if you look at index, one thing I've realized is that people should, in last 6 months at least of this financial year, people would have realized that there is a difference between index and markets. Index since October has corrected. The way our index is formed, but not only every global index, if you look at it, is broadly divided into various sectors, and the way we have, if there is a weakness in rupee, IT stocks will do well, so they will ensure the index does not fall. If there is a rise in oil prices, which, if the interest rates are likely to go down, so you have a banking, then you have industrial, so there are the indexes formed in it. So, index is different, stock market is different. Index is just a one very small sub part of, the broader stock market and investing universe which people have. Unfortunately, it's because of the narrative or whatever you might call it, we all associate our investment, बाजार आज बढ़ गया तो मेरे पोर्टफोलियो को क्या हुआ, बाजार घट गया तो मेरे पोर्टफोलियो को क्या हुआ. So, this comparison itself is wrong. And to that way, I think, in last financial year, after a very long period of time, people would have realized that, let me look at companies, because, see, last 6 months, the index has been volatile, but there are sectors and stocks where the performance has been good, and there are sectors and stocks, including the much hyped, the new age companies and all the blah, 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 who have not done well. So, it's a time I think it was a time for great learning. And coming year, I think all those new kids who have come in the market after the COVID, as I call them, post-COVID investors, those are people who probably will learn a lot of lessons from markets and volatility and global and events. All those who assume that markets don't correct are likely to learn a lesson. Index might correct less, but businesses do correct. So, राजीव जी, जैसा आप कह रहे हैं कि जो नए लोग आए हैं, नए इन्वेस्टर्स आए हैं बाजार में कोविड के बाद, अगर हम देखें तो जो सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान SIP के इनफ्लोज हैं, उसमें लगभग 29% का उछाल आया है पिछले वित्त वर्ष में. जो फिगर्स थी फरवरी तक 29% का उछाल था. सो 11 महीनों में इसको आप कैसे देखते हैं? ये जो एक स्टेडी एक कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, क्या आपको लगता है ये आगे भी ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा? देखिए, दो वजह है. आई डोंट नो वेदर इट्स मेजर ऑफ कॉन्फिडेंस. दो चीजें आप देखें. हिंदुस्तान में बहुत बड़ी संख्या जो एम्प्लॉयमेंट जो लोग हैं, जो यंग पॉपुलेशन है और जो डिसेंट अमाउंट ऑफ मनी कमाते हैं, वो एक सेक्टर से में फोकस्ड है, वो है IT क्षेत्र. सो इफ यू लुक एट इट, the maximum rise which has come in the income levels is from the people, kids who are working in the IT sector, whether it's a large company or a small company. If it's an IT, probably computer science engineers are the ones who have seen the maximum rise in their salaries in last 2 years. Look at the balance sheet of Infosys and there talks about attrition rate, how the wage pressures are increasing, all those things. And they are able to do it because the demand for Indian IT services has gone up tremendously these last 2 years. Now, when those kids, I'm using the wrong word, kids, those investors, young investors, colloquially, are having a certain amount of income, they allocate a certain amount of saving. They are going to, they have the basic nature of saving. Despite the fact that, of course, they spend well and they save also. So what normally happens is that saving, because, they are not it's not easy to buy real estate in one go. And with the ease of transaction, with there are so many apps and everything, and the reach out effort which these apps have done, the ease of transaction, all those things have brought these kids, these young investors to market, and they are continuously putting their saving. And they're in no hurry to sell it because, the fact is that their income levels are rising. They don't find any other, where do they kind of
investors. Gold, everyone knows, of course it's a store of value and one should have some amount of it. But beyond a point, the returns are poor. Inflation-adjusted returns are poor. They get bunched up only. So that is the reason why I think inflow, some bit of it, when market will correct, some people will question, some people will worry, boss, mera long-term investment galat ho gaya. All that, thought process is going to come in. But broadly, I think my hunch is that this side of the flows are going to continue for foreseeable. I mean, if let's say 2.5. तो ये बाजार को आपको लगता है स्ट्रेंथ प्रदान करेंगे? ये नहीं, देखिए बाजार को स्ट्रेंथ मैं आपको कहूँगा काउंटर वेलिंग फोर्स करेंगे. पहले क्या होता था, एफआई ने बेच दिया ये हो गया, एफआई ने बेच दिया ये हो गया, एफआई ने कर दिया ये हो गया. ऑल दोस थिंग्स वर हैपनिंग. वो सारा कुछ इसी पर डिपेंडेंट. आई स्टिल डिस्टिंक्टली रिमेम्बर माय फ्रेंड्स कॉलिंग में, मैं बाहर हूँ यार, देखिए तेरा एफआई का बाय सेल नंबर क्या आया. तो दैट होल थिंग, ठीक है आया होगा, 2,500 करोड़ बिका, क्या होगा, उन्होंने इतना माल बेच दिया, क्या होगा. जितनी सेलिंग अभी इस बार आई है वो 2008 से ज्यादा है. पर हमारे लेवल ऑफ इंडेक्स की करेक्शन देखिए 15-20% में सब 15-20% में साफ, उसके बाद फिर हम वापसी. सो दैट डोमेस्टिक सेविंग का जो पैसा है वो यहाँ आना शुरू हुआ है. बीच में फेजेस आएंगे जहाँ कम होगा, लेकिन ब्रॉडली आई थिंक दिस इज समथिंग विच हैज चेंज इंडिया फॉर गुड फॉर एवर. We've had a lot of reforms. We've had GST. We've had the exports went up, and the automobile industry is doing well. How do you view that as giving us a sound base for a robust economy, our country's? I think GST, my view for almost now so many years has been that that's a major reform, and that is that there were many businesses which were essentially being run because of tax arbitrage. The people will not pay tax, some people will pay tax, the people who will not pay tax, they will be able to sell their goods cheaper. And so now the tax arbitrage is going to get over. There was a revenue leakage. When there is a revenue leakage, there is going to be issue with the, ability of the government to spend on the infra project. All those things are there. Coming to your question of automobile, I think that's a sector which is going under a transition. We are going to see many ifs and buts. This is probably which EV is going to make money, which EV is not going to make money, what kind of a scooter is going to make money, what kind of a bike is going to make money. That will become, right now narratives and hypes and getting those valuations is the story. Let's see after a couple of years, how many of these companies are actually making money out of it. I don't think so everyone is going to make money. The government is giving a lot of push to EV. And that's fine. I mean, that's fine, and that's what government is supposed to do, because the fact is that giving incentives also. No, that's absolutely fine for two reasons. One, of course, the environmental, and secondly also because of the fact that we need to lower our oil imports. Absolutely. And I'm not saying today it will happen, but 10 years down the line probably, and gradually over the rate of growth at which we're going, all those things are going to change. The EV and all going to So it could be a win-win situation, environment के लिए भी और हमारी जो ओवर डिपेंडेंस है इंपोर्ट्स पे ऑयल की. हाँ, वो उससे होगा ना. नहीं तो अगर उसका ना हो तो आप आज देखिए ना, हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट्स ऑलमोस्ट अभी इस भाव पे तो नहीं मैं कहूंगा कि जो ऑयल का भाव होगा, पर कुछ महीने पहले तक हमारे सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट सऊदी अरेबिया के ऑयल एक्सपोर्ट से ज्यादा थे. तो अब नहीं है, क्योंकि अभी तो भाव आसमान छू गया. लेकिन और प्रोबेबिलिटी कि हमारे एक्सपोर्ट तो बढ़ते रहेंगे, चाहे वो 10% या X% से बढ़ते रहेंगे. इट्स नॉट नेसेसरी, कोई सेकुलर प्राइस तो होता नहीं है ऑयल का. सो एज ए इकोनॉमी हमारे पास जो बाइंग पावर, जो सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, हमारी IT सर्विसेज या फार्मा लेके आ सकती है. अब जो मैन्युफैक्चरिंग का जो पिछले आई थिंक 3 साल पहले जो रीजिग हुआ था अबाउट ब्रिंगिंग मेकिंग इंडिया एज अ कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, वो ऐसा नहीं है कि आपको उसी टाइम दिखना शुरू हो जाएगा. बट आई थिंक प्रॉब्ली जो न्यूयॉर्क में बैठा प्लान बना रहा है, वो थोड़े दिन बाद ये जरूर, पहले तो वो चाइना के अलावा देखता नहीं था, तो अब ये तो देखता ना, चलो चाइना में या इंडिया में, वो बात की बात है वो कहाँ जाता है. लेकिन एटलीस्ट अब हम उस डिस्कशन स्टेज पे तो आए, विच इज वेरी सिमिलर टू 1990 2001. तब तक FI आते जाते 2002-3 में इंडिया बिकेम वन ऑफ द नेसेसरी पार्ट ऑफ देयर पोर्टफोलियो. We probably not today, maybe couple of years down the line will become a necessary part of their manufacturing supply chain.
बिल्कुल, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जो ये हम यूक्रेन रशिया का कॉन्फ्लिक्ट देख रहे हैं, उससे भी सप्लाई साइड चेन में हमें अपनी जगह बनाने की कुछ अपॉर्चुनिटीज पैदा हुई हैं। आई थिंक चाइनीज की वजह से ज्यादा हुई है सप्लाई। यूक्रेन और रशिया का तो मैं नहीं कहूंगा कि ये इतना है, बट इट इज एंड द फैक्ट इज दैट एवरीबडी हैज रियलाइज कि पिछले 30-35 साल से एक ही चीज पे एक ही जगह सबको चलो यहाँ भी कर लो ये कर लो। नाउ दे हैव रियलाइज देयर आर रिस्क which they never thought will come to the global market in last 100 years. I don't think so कि अच्छा बात जरूर है कि आप डॉक्यूमेंट्री में देख लेंगे पेंडेमिक आएगा, पर किसी इंडस्ट्रीज ने ये या किसी कंपनी ने ये नहीं सोचा था कि ये होगा तो ये होगा। मतलब आप देखिए कि यूएस में जो पेंट इंडस्ट्री है उसमें जो पर्टिकुलर कलर यूज होता है वो अवेलेबल नहीं हुआ बिकॉज ऑफ सप्लाई चेन डिसरप्शन। तो जो पूरा प्लांट था बिकॉज ऑफ जस्ट वन पिगमेंट they had to stop a production of a whole range of this thing. So obviously they will say, okay, fair enough. I don't know whether they will start manufacturing that in US, but they'll say, okay, fair enough. If I'm putting another factory out there, so let me look at India. Let me look at some other places. So there is a change which is happening. So ये जो चेंज हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ प्राइसेस भी बढ़ रहे हैं, क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कमोडिटीज, हालांकि अभी हम देख रहे हैं कि कुछ सॉफ्टनिंग हुई है पिछले 3-4 दिन में, लेकिन जो इनपुट कॉस्ट प्रेशर्स हैं उनके चलते आपको क्या लगता है जो मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स आने वाले हैं, अभी जैसा इन्होंने कहा लालिमा ने कि न सिर्फ फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ है, ये क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, क्या आपको आशाएं हैं कॉर्पोरेट रिजल्ट से? कौन से सेक्टर्स आपको लगता है हिट होंगे, कौन से शायद अच्छा शाइन करेंगे? देखिए, जहां पे भी क्रूड ऑयल और क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव्स, जैसे आप पेंट कंपनीज ले लीजिए या आप कुछ केमिकल कंपनीज ले लीजिए, जहां पे भी वो एक एज अ पार्ट ऑफ रॉ मटेरियल है, वहां पे मार्जिन अंडर प्रेशर होंगे बिकॉज थर्ड वेव का आपका इसी क्वार्टर में आएगा। ठीक है, इकोनॉमिक इम्पैक्ट कम था, लेकिन फिर भी थर्ड जो वेव ओमिक्रॉन की है उसका इम्पैक्ट आएगा। देन थोड़ा सा इम्पैक्ट आएगा आपका एक्सचेंज रेट का, वो सारी चीजें होंगी। तो देयर आर सेक्टर जहां पे इन और क्रेडिट ऑफटेक अब बढ़ना शुरू है, पर पहले इतना नहीं था इनिशियली अगर हम बात करें। सो दो तरह सेक्टर जहां मुझे लगता है कि नंबर उतने अच्छे नहीं आएंगे। जहां अच्छे आएंगे वहां पे शायद जो वैल्यूएशन है दे आर नॉट वेरी चीप। China facing severe lockdowns, is that advantage India? No, I don't think so. It's an advantage in the. I mean, it's a see, again, it's a battle of the fact that they claim that we got everything vaccinated. This that. Events like what's happening today out there, when it is, I mean, I don't know वहाँ से information क्या आती है वो तो भगवान भी नहीं जान सकते. The fact that they said we vaccination rate is there, XYZ is there, and all of a sudden they're not saying there is a different variant. It's Omicron only. Now, that means either the vaccine which they were using was not effective, or they were never given the vaccine. They just thought, हो गया खत्म, चलो जिसको नहीं हुआ तो भी जाने दो. So I don't know. I mean, advantage I wouldn't say, but it reinforces a feeling in the minds of people who make decisions. Boss, India is something which you cannot overlook now. I mean, if there is something which you have to take care, is that if you want something else, China plus one, India stands to be more, because that's, see, we underestimate the fact that democracy is a huge power, which is the biggest democracy in the world, and with the rule of law, where you can own an asset. Okay, people will say हमारा delay हो जाता है, judiciary में हो जाता है, वो होता है, but the fact is, बस जब आप कोर्ट में जाओगे टाइम लगेगा, कुछ होगा, लेकिन आपको फाइनली जजमेंट विल कम. एंड ये ऐसा नहीं है कि बिल से हमारे यहाँ तो कुछ होता नहीं है, बाकी ऐसे एज इफ बाकी देशों में सब कुछ ऐसा हो रहा है. अगेन वी शुड टेल द वे थिंग्स पैंड आउट इन सर्टेन कंट्रीज and developed countries with how they handled COVID and the way we handled COVID. Of course, in second wave, we also had the issue of shortages and all. But we never had the shortage of testing kits. US had it. Yes. We even exported PPE. Yeah, I mean, all those things. So we are far more reactive. Cut, chalo, ye chalu karne ka, aisa. So all those things matter. Now, so India's image in the mind of a lot of people, decision makers, has changed in the last 2 years. In fact, अगर हम स्टार्टअप इकोसिस्टम की बात करें, जो
जो भारत में काफी बड़ी तादाद में स्टार्टअप्स रजिस्टर हो रहे हैं, उनको एक पुश भी दे रही है सरकार, एमएसएमईज को भी पुश दे रही है। एंड अभी हम प्रोग्राम से पहले आपसे बात कर रहे थे कि यूनिकॉर्न्स 41 यूनिकॉर्न्स 2021 में भारत में उभरे हैं, जो थर्ड लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, थर्ड लार्जेस्ट नंबर। जो नंबर ऑफ पीई प्राइवेट इक्विटी या जो वेंचर कैपिटल फंडिंग डील्स हैं, उनकी जो क्वांटिटी है, नंबर है, वो 58% बढ़ गया है 2021 में, एंड एवरेज डील साइज डबल हो गया। सो आपको लगता है कि भारत में जो आप कह रहे हैं कि एक रिन्यूड इंटरेस्ट है, वो हर लेवल पे है, छोटी कंपनीज, बड़ी कंपनीज? नहीं, इसी देखिए, जहां तक स्टार्टअप की बात है, दैट इंटरेस्ट वाज ऑलवेज देयर. We produce the biggest and largest number of engineers. We produce one of the best quality brains as far as CS is concerned. And whether it's Mr. Satya Nadella or Mr. Sundar Pichai, they're all product of Indian IITs only. Yeah. So, you know, that brand and that perception moves on. I mean, you have I think I'm just missing the name right out. He's also an Indian who is now heading that global company. So, you know, all those things, these perceptions do matter. Now, startups, my whole focus area is not of what we are talking about in 2022. I'm thinking about 2030, 35. It's manufacturing. See, the fact is that while we are exporter of pharma, the fact is that we are in pharma, the problem is हम चाइना से इंपोर्ट करते हैं 90% अपनी रिक्वायरमेंट, उसके बाद हम रीप्रोसेस करते हैं और आगे कर देते हैं. वो पीछे से अगर चेन में प्रॉब्लम आ गया, metformin, which is the most common this thing used, you know, diabetic for controlling your sugar levels. Yeah. Essentially, हमारा majority of the raw material come from China. So I'm more keen, and I'm hoping that given the push, it will happen that you will find that these numbers are going to come down. So manufacturing is something. So production linked incentive में APIs में भी जो आप कह रहे हैं कि active pharmaceutical ingredients, in fact drone manufacturing, जो भी इस तरह के new age sectors हैं, उन सब में उसको केंद्रित किया गया है. आपको लगता है कि इस तरह की पुश सरकार से लगातार रहनी बहुत important है, along with the monetary policy support? The monetary policy support though is a very different issue, but yes, policy support as far as these are concerned, these new age industries are concerned, and especially in manufacturing, like EVs. अभी EVs में हम लोग ठीक है बन रहा है, पर कितना पार्ट तो हमको मजबूरी है कि ठीक है अब आपको बैटरी का वो 90% बाहर से इम्पोर्ट ही करना है, आप कुछ नहीं कर सकते. बट आर वी डूइंग रिसर्च ऑन दिस, ऑल दोस थिंग्स. बट माय दिस थिंग इज दैट मैन्युफैक्चरिंग probably will do well. Right now we are, as far as manufacturing is concerned, we are still suffering from the problems which Indian industry started witnessing in 2008-9. We still have not actually recovered from that overvaluation of real estate, bad bank loans. मतलब लोन चल रहा है, जिसको भी चाहिए ले जाओ बॉस लोन. हर कंपनी कह रही है मैं यहाँ रियल एस्टेट पार्क डेवलप कर रही हूँ. All those things are going to change. That over, you know, phase where you announce a project and then think what I'll do. We raise the money from banks, partly from the market, and then think बाद में क्या करेंगे. All those things are going to change, and it's going to take, I think, that inflection point is not very far away. Well, we talked about the batteries. India has committed to invest $6 million in Australia to explore lithium and cobalt mines for its electrical vehicle plans. Just a bit of a nugget there. Yeah, absolutely. I mean, इस तरह की जो expansion है या free trade agreements है, you agree that उससे भी बहुत एक संबल मिलता है trade को, exports को. These are small little things. जी. आपको शायद, you know, आपको एक single line होगा, but these small things finally makes a big difference. I mean, and there's a possibility. मतलब हो सकता है ये छोटी छोटी चीजें 6 million. If I look at 6 million, I said, you know, when she was reading the news, I said 6 million, what's the big deal? Then it struck me, okay, 6 million. Yeah. It might sound small, but maybe it's a precursor to a bigger thing. It's a new area also. Not new area. I mean, it could be, of course, it's not a new area for Indians, you know, because some of our institutions have been doing a lot of research on cobalt, especially, so in the south. This thing is that at least there is some effort to think in that direction. That is more important to me, is
is attitude of the government, then what exactly, then actually what happens later on? A small step, but for a big change. So on this positive note, चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय बाजारों की ओर। एशियाई क्षेत्र के सभी प्रमुख शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख था, सिवाय दक्षिण कोरिया के, जहां कॉस्पी सूचकांक 0.4% की बढ़त पर था। जापान के निक्केई में 0.7% और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक में 1% की गिरावट दर्ज हुई। हांगकांग के हैंगसेंग में 1.1% का नुकसान दर्ज हुआ और चीन के शंघाई कॉम्पोजिट सूचकांक में 0.4% की गिरावट रही। यूरोपीय क्षेत्र की बात करें तो दिन के कारोबार में यहां भी मामूली गिरावट थी। लंदन के फुटसी में 0.1% का नुकसान था। फ्रांस के कैक में 0.5% की गिरावट थी और जर्मनी के डैक्स में 0.3% की मंदी थी। US stocks fell yesterday with the Dow and the S&P 500 snapping 4-session winning streaks on waning signs of progress for peace talks between Ukraine and Russia against a backdrop of a hawkish Federal Reserve curbing economic growth. The Dow Jones Industrial Average Index slipped 0.2%, the S&P 500 fell 0.6%, and the Nasdaq Composite tumbled 1.2%. राजीव, क्या कहेंगे आप? यूक्रेन और रशिया की जो कॉन्फ्लिक्ट है, उससे जो सप्लाई साइड डिस्ट्रप्शंस हो रही हैं, वो कितनी एक गंभीर प्रॉब्लम हो सकती है भारत के लिए इन टर्म्स ऑफ कमोडिटी प्राइसेस, ऑयल प्राइसेस? Oh, that's one, oil prices of course is जो problem area है, बट लाइक सम ऑफ द की इम्पोर्ट्स है, जो जैसे फर्टिलाइजर के इम्पोर्ट्स हो गए, उसमें थोड़ा यूक्रेन और उधर से प्रॉब्लम आ सकती। सो दी ऑयल्स जो एडिबल ऑयल कैटेगरी में आते हैं, उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ सकती। सी सप्लाई चेन डिस्रप्शन इन एनी वे कॉज्ड बाय अ वॉर इज समथिंग स्टुपिडिटी व्हिच हैज बीन फोर्स्ड ऑन द मैनकाइंड। It's a lose-lose situation. Yeah, I mean, but the fact is that there is no point in predicting it when will it go over, because the people who have started it also don't have no idea what's going to take it. So the only thing is that these are lessons where, you need to figure out what are hedges, what are my alternatives. I need to be in mind, as a country we need to, यहाँ से नहीं आएगा तो यहाँ आएगा, यहाँ से नहीं आएगा तो यहाँ से आएगा. And where there is a critical part जो supply chain disruption हो, जैसे मैंने अभी पेंट की बात करी थी, जैसे हमारे यहाँ जो आप मेटफॉर्म की बात करी, chips of course the government is working on it, and I think it's going to take some time, but probably we're going to be independent 2 decades down the line. I think there are some lessons which we can have from this. अब शॉर्ट टर्म में तो कोई सोल्यूशन हम कर नहीं सकते। ब्रीफली आपको लगता है कि वीट या स्टील या मेटल में हम वी कैन फिल इन, जहाँ पे वहां से एक्सपोर्ट्स आते थे यूक्रेन और रशिया? स्टील, इट डिपेंड्स ऑन द कैटेगरी. आई डोंट थिंक स्टील इज एन इशू, और वीट एंड ऑल दोज थिंग्स आर नॉट एन इशू, ऑल दोज थिंग्स आर नॉट मैटर. All right, let's take a look at the oil. Well, oil prices today declined around 6% in intraday trade. Brent crude was trading around $107.10 per barrel, while WTI crude prices were at $100.60 per barrel. Well, not just India, but US also is facing a lot of inflation, so that gives us some solace. No, I mean, absolutely not. For a simple reason, somebody else is getting it doesn't make me better. The only thing I would say is that this is a lesson that even with the best economy in the world, you are prone to certain problems, and when we are planning our things, let's not. And India can do it for 2 simple reasons. See, essentially, to be very honest, I mean, US essentially is a very lethargic country. I mean, look at and Indians are not. Americans are. And so we should make sure that our policymakers should ensure that, the supply chain, all those things, and the way we make out, actually, wo Atmanirbhar is not wrong. I mean, we should actually seriously do it. Of course. Yeah. आइए अब चलते हैं सराफा बाजार. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अप्रैल अनुबंध वाले सोने का मूल्य 260 रुपए बढ़कर 51,215 रुपए प्रति 10 ग्राम पर बंद हुआ, लेकिन मई अनुबंध वाली चांदी 510 रुपए सस्ती होकर 67,255 रुपए प्रति किलो हो गई. न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना मंदी के साथ $1,934 $0.40 प्रति आउंस पर था. चांदी भी गिरावट के साथ $25 प्रति आउंस पर थी. ब्रीफली, आपको लगता है पोर्टफोलियो में कुछ परसेंटेज सोने का भी होना चाहिए न्यू इन्वेस्टर्स? इट्स अगर आपके डॉलर डिनोमिनेटेड एसेट यही है जो आप इंडिया में ओन कर सकते हो, बट आपको कम करना पड़ेगा. नाउ यू कैन ओन फॉरेन स्टॉक्स इन इंडिया. NSE has already started platform. You can go and there buy it. Of course, they're limited stocks. The question is that unless you have that dollar denominated this thing, gold is a necessary evil. समय समाप्त हो रहा है. राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका शामिल होने के लिए. And before we close, as a reminder, the headlines:
Domestic stocks log modest losses amid weak global cues. Sensex closes below 58,600. Nifty settles near 17,450. Rupee appreciates to 75 rupees and 79 paise against the US dollar, and Brent crude prices plunged 6% to trade around $107 per barrel. That's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is Lalima Aneja Dang and my co-anchor Sonu Sood bidding adieu. Namaskar. Market Mantra.